Hello everyone, welcome back to our PYQ series Revise to Ace, and what we are going to discuss today, I was eagerly waiting for this day. Why? Because I was waiting for this date 16th April 2023 because on this date UPSC has conducted two exams. One is CDS 1 2023 and NDA 1 2023. Actually UPSC NDA और CDS का एग्जाम साल में दो बार कंडक्ट करवाती है. So I was waiting for this paper. And here we have found unique way of asking questions. CDS में ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, ज्योग्राफी के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं and unique way of asking questions has been encountered. वो क्या है, कैसे है, we will see, we will discuss. And with the help of those questions we will discuss about the locations on the world map, lakes and world heritage sites. थोड़ा अलग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा गया है. So let's take the questions and accordingly we will discuss it with the help of questions itself. Here we have the first question. CDS 2023 exam conducted on 16th April 2023. बस 2 दिन पहले. ठीक है? अभी देखते हैं. Don't worry, I will cover all the important relevant questions for CSE 2023. The question is, Rani told her friends that last year she did boating in 4 different lakes at 4 different locations. Name Loktak, Barapani, Koleru and Pulicat. Which of the following states did she visit? क्वेश्चन सिंपल है कि रानी ने अपने दोस्त को बोला 4 प्लेसेस पे गई थी और वो 4 प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं. थोड़ा सा कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में नर्वस कराने की फीलिंग है, राइट? बट द क्वेश्चन इज सुपर इजी. लोकटक लेक वी ऑल नो इट इज इन मणिपुर. बारापानी नहीं भी पता है, छोड़ो अभी कोई बात नहीं, रहने दो. लेक कोलेरू इट इज इन Andhra Pradesh. Pulicat, Andhra Pradesh Tamil Nadu border, majorly in Andhra Pradesh, but yes, certain portion is there in Tamil Nadu as well. इतना क्वेश्चन हमें पता है. Manipur, Andhra Pradesh and Tamil Nadu has to be there. Second one we don't know. So Manipur is there in 2 of the options. Okay, eliminate these 2 options because Manipur is not there. Now we are left with Manipur. Kerala we can eliminate. Kerala is not the cannot be in the option, so we have to eliminate Kerala. Naturally अपने पास आंसर क्या मिल जाता है? B. तो ये आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, but the way they have asked. अब सबसे बड़ी बात है बारापानी रिवर, बारापानी लेक, सॉरी, it is in मेघालय. It is famous with another name. We know it as a different lake. अभी डिस्कस करेंगे सबके बारे में डिटेल में, you will get to know. But see what kind of question. एक स्टोरी फॉर्मेट दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, at the same time you can reach the answer. Maybe they have given very simple lakes here, they will give different lakes in the CSE examination. We have to be ready. Let's discuss one by one about all of them. So Loktak Lake, we know it is largest freshwater lake of Northeast India. It is known for its own kind circular swamps which are called as fumades. क्या होते हैं? Basically soil होता है, decomposed और semi decomposed ऑर्गेनिक मैटर होता है, सॉइल होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसी को फुमदेज बोलते हैं. ऑन फुमदेज यू विल फाइंड डांसिंग डियर विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रो एंटलर डियर शांगाई. मणिपुर का स्टेट एनिमल है. इट इज IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड. एंड वी ऑल्सो नो दैट द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, इज ऑन दिस लेक, located on this lake. And it is one of the Ramsar site, and it is also a site which has been there on the Montreux record since long time. Montreux record क्या होता है ये पता होना चाहिए. Ramsar sites अभी इंडिया में 75 sites हैं. So God only knows that how you guys are preparing. But yes, there are ways, multiple revisions you can prepare. ठीक है, घबराना नहीं है उससे. Montreux record 2 ही sites हैं, केवलादेव और our लोकतक. In Montreux record KLM, केवलादेव, लोकतक in Montreux, तरीका हो गया याद करने का. So this is about Loktak Lake. Coming to the Umiam Lake, ये तो ऑप्शन में नहीं था, but Umiam Lake is also known as Barapani Lake. It is a reservoir located in the hills 15 km from Shillong, basically in Meghalaya. It has been created by damming the Umiam River in early 1960s, and yes, it is not a Ramsar site. कभी कभी ऐसे भी यूपीएससी अगर
ऑप्शन दे देता है, which of the above are Ramsar site? Rani went to she did boating in all these 4 states. Which are 4 lakes? Which of the following lakes are Ramsar sites? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. The third lake वो in the question was Koleru Lake. It is located in between the deltas of 2 rivers. Name Krishna and Godavari, and they are in Andhra Pradesh. It is not exactly on the coast. Lake है, inside है, mainland की तरफ है, थोड़ा सा coast के अंदर है. Yes, it is a Ramsar site, and it is also famous for Atapakka Bird Sanctuary. Atapakka Bird Sanctuary at Koleru Lake has become a safe breeding ground for the migratory birds called grey pelican and painted storks. ये हमेशा न्यूज में रहता है. Question can be framed on this information. Atapakka Bird Sanctuary is where? Famous for what? So this is Umiam Lake's image. Lake Pulicat. Pulicat कहाँ पे है? It is the second largest brackish water lagoon. Basically brackish water lake है, lagoon है, brackish water ecosystem in the country after Chilika Lake. Chilika Lake is in Odisha. This is the second largest brackish water lake. Where it is located on the borders of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It lies majorly in Andhra Pradesh. We will see it here on the map. This is Tamil Nadu, yellow, and the green one is Andhra Pradesh. Here you can see the blue one, Pulicat Lake, and Pulicat here, the minor portion you can see is located in the Tamil Nadu state. Rest all, more than 99% it is there in Andhra Pradesh. And you will find Sri Harikota. Sri Harikota is in Andhra Pradesh. किस लिए फेमस है, क्या है ये? You should know about it. If you know, please let us know in the comment section. Pulicat Lake is also famous for the annual Flamingo Festival, which is held in January at Pulicat Lake every year. And yes, it is also one of the Ramsar site. ये 4 लेक से related information हमारी revise हो गई. Question can be asked on any of it. And एक बार क्विकली मैप आप लोग प्रिपेयर करते हो, सो आई हैव केप्ट दिस फॉर सिंबॉलिक पर्पस दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग यू रीड इट विद द हेल्प ऑफ मैप्स. फॉर एग्जांपल यू कैन सी चिलिका लेक इज देयर, लगून, पुलिकट ऑल्सो. फर्स्ट इंफॉर्मेशन नोट कर लिया करो. सेकंड, व्हाट? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, कोलेरू फ्रेश वाटर, कृष्णा एंड गोदावरी, सांबर, वूलर. इस तरीके से अपना मैप प्रिपेयर करो हर चीज़ का, चीज़ें आसान हो जाएंगी. काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर याद नहीं रहती चीज़ें, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग बना दो, द वे यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन. फैक्ट्स से कोई मेमोरी अटैच कर लो. मे बी यू वुड हैव विजिटेड सम प्लेस, यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग. इट इज इन आवर हैंड. कोई इमेज देख लो, डांसिंग डेयर देख लो, फुमदीज देख लो. If we revisit the question again, the question was super easy. Rani told her friends last year she did boating. We know the answer is Manipur, Meghalaya, Andhra, Tamil Nadu. अब आप कहोगे कि सर पुलिकट लेक भी तो आंध्रा और तमिलनाडु दोनों में है. ठीक है, आंध्र प्रदेश तो कवर हो ही गया ना ऑप्शन में. सो इट इज देयर इन तमिलनाडु एज वेल. सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन द वे यूपीएससी हैज आस्क्ड, इंटरेस्टिंग वे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी हैज आस्क्ड इन अ सिमिलर मैनर. द क्वेश्चन इज, विक्की टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज विजिट टू स्टुअर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, हॉक बे. व्हिच कंट्री डिड Vicky visit? Canada, Australia, New Zealand, Ireland. Bouncer. ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है. And why UPSC has asked this? There is a reason behind it. Even if you know one of them, you can mark which country did Vicky visit. चलो देखते हैं why it has been asked first. In the first instance, they should know why it has been asked. So this was the news. In the Hindu, you will find this article. It was there on February 17, 2023. New Zealand cyclone fatalities reach 8, more deaths feared. Cyclone Gabrielle. This was there. And there was an image given after this article, and below that it is written, a house is surrounded by debris floodwater in Hawke's Bay, New Zealand. यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. अलर्ट रहना पड़ता है. My students who are there in the classroom program, or the quick bites, current affairs prelims classroom program, or the quick bites, you must have come across like how many news we have covered like this. Volcano in news, earthquake in news, floods, flash floods, tornadoes. जितने भी ऐसे
न्यूज़ में चीज़ें रही हैं हमने कवर किया। लोकेशंस इन न्यूज़, कहीं पे कोई सिविल राइट्स हुए हैं, कहीं पे यूक्रेन रशिया इशू, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस इन द PYQ सीरीज एज वेल, यूक्रेन रशिया वॉर्स की वजह से जो लोकेशंस इन न्यूज़। सो दिस इज हाउ यू शुड कवर। सो वन न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ वॉज देयर in January 2023. Natural disaster. New Zealand roiled by flash floods, landslides for the third day. And here in this article it was given, in nearby Bay of Plenty, there was a widespread flooding, police said, as well as landslide that had knocked down a house. So this was given in the article. I know, जब ऐसी चीजें आती हैं, we are not very attentive, we are not very alert. हमें लगता है अच्छा इस पे क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, बट देखो क्या क्वेश्चन आता है। फिजिकल फीचर्स, वर्ल्ड मैप पे जो लोकेशंस इन न्यूज, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसको इंटरेस्टिंग एलिमेंट डाल दिया। विक्की, इट वाज, दे हैव नॉट आस्क्ड दैट रिसेंटली दीस लोकेशंस वर इन न्यूज व्हिच कंट्री, दे हैव आस्क्ड अच्छा विक्की यहां गया था और कहां, किस कंट्री में गया। ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड लोकेशन? थर्ड लोकेशन, 145 स्ट्रैंडेड पायलट व्हेल्स डाई इन न्यूजीलैंड। एंड स्टैंडर्ड पायलट व्हेल्स का न्यूज साल भर 2022-2023 में कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। बट हाउएवर दिस आर्टिकल, दिस इज फ्रॉम 2018. आई विल नॉट से दैट दे हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन ऑन 2018 बेस्ड न्यूज, बिकॉज अगर ऑलरेडी आपको 2023 की जनवरी की और फरवरी की न्यूज आर्टिकल्स पे लोकेशंस पता है, यू विल रीच द आंसर. व्हाट आई वांटेड टू शो दैट how these articles they mention these locations. For example, they have mentioned 145 pilot whales died in New Zealand on the weekend on Stewart Island in the extreme south of the country. So they have mentioned it. We have to be attentive. The students who are watching it for 2024 or even for 2023, आप लोगों ने कोई compilations पढ़ी है? I'm not very sure that in compilations they cover like this. But yes, in our current affairs classes we have covered like this and it should be covered. So even now you have time कि अगर ऐसी चीजें आपको मिलती हैं, ध्यान रखो. Students who are preparing for 2024, you know what to do, right? Now let's revisit the question again. The question is, Stewart Island, we know. Stewart Island is in New Zealand. Bay of Plenty in New Zealand. Hawke Bay, New Zealand. Where did Vicky visit? Vicky visited New Zealand. This is CDS 2023, my dear friends. Now on the similar lines, you should also know the locations. You should also cover the locations which were in news. For example, 14 dead sperm whales found beached on the Australian island. ये कहाँ पे बात हो रही है? King Island, part of the state of Tasmania, in the Bass Strait between Melbourne and Tasmania. So Bass Strait is a physical feature which is in news, and King Island is a physical feature which is in news, which is part of Australia. इसी तरीके से श्रीलंका की भी एक न्यूज थी, श्रीलंका का भी एक बीच मेंशन था. So we should know that. There was another news, 500 pilot whales dead after New Zealand mass stranding. It was in news in October 2022. Anyways, we should cover the news of 1.5 years. That is what we are doing. जनवरी 2022 से मई 2023 तक की न्यूज आपको पता होनी चाहिए. 500 whales dead after New Zealand mass stranding. And where this mass stranding happened? Let's see. New Zealand's remote Chantan Islands. Okay. Shark-filled waters. Okay, ठीक है. 2 superpods of the, ये सब दिया है न्यूज में. On 2 islands in the remote chain. ठीक है. अब इसमें आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा फाउंड ऑन चांतम आइलैंड एंड 250 वर फाउंड ऑन चांतम आइलैंड, चाथम आइलैंड एंड 240 वर फाउंड ऑन पिट आइलैंड. चाथम एंड पिट आइलैंड. माय डियर स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ द क्लासरूम प्रोग्राम और द क्विक बाइट्स, वी हैव कवर्ड दिस, राइट. अगर ध्यान से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, चीजें मिलेंगी. ठीक है, ये न्यूज में था. सो दिस इज हाउ यू शुड कवर द लोकेशंस इन न्यूज. अर्थक्वेक्स, आइलैंड, हवाईयन आइलैंड्स पे इंडोनेशिया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए. अर्थक्वेक्स नहीं, वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं. यू शुड नो अबाउट इट. एंड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे इन द सिमिलर स्टाइल, मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली.
He will be visiting where? He will be visiting Red Fort, World Heritage Site, yes or no? Qutub Minar, World Heritage Site, yes or no? Jama Masjid, World Heritage Site, yes or no? You know. ठीक है, इंडिया गेट, जामा मस्जिद. अब देखो रेड फोर्ट और कुतुब मीनार सब में है, जो अलग है वो मैं आपको दिखा देता हूं. इन द लास्ट ऑप्शन रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, इंडिया गेट इज नॉट देयर. इंडिया गेट इज देयर. Rest three of the options, Red Fort and Qutub Minar is there. However, Jama Masjid, India Gate and Humayun's tomb is mentioned. India Gate is not a World Heritage Site. Jama Masjid is not a World Heritage Site. तीन ही World Heritage Sites हैं इंडिया में. And you know, you should revise how many World Heritage Sites. Okay, this is homework. How many World Heritage Sites are there? Natural कितने हैं? Culturally कितने हैं? Mixed कितने हैं? Mixed वाला जो है वो mixed category में क्यों डाला गया है? And especially what is the natural importance of that mixed category? Cultural तो आप बता दोगे. Culturally भी बताना किसके लिए वो important है. Let's see how many of you know about it. नहीं भी पता, रिसर्च करके खोज के बता दो. But I want the answer in the comment section. So here the answer is Red Fort, Qutub Minar, Humayun's tomb. India Gate is not in World Heritage list. Jama Masjid is not in World Heritage list. And here you can eliminate India Gate. My dear students, this is how UPSC has asked the question in the recent like 2 days back. So we have Red Fort, Humayun's tomb, Qutub Minar. So this was the question. Answer is C. So we have done this question, World Heritage Sites. We have done the Rani ka lake, Rani visited. So Rani, and who was the first fellow? Manav, Rani and Vicky ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया ये सब हमने देख लिया. And Vicky visited the country called New Zealand. These were the 3 questions which are very, very important. Keeping in mind that how UPSC is asking the questions, we should know. And precisely this is what we are doing in our current affairs series. We have launched this current affairs quick bite where we are covering 1000 plus important topics. We are covering it 800 plus in topics through MCQs. This is our style. We teach it in MCQ format and 200 through snippets, practice questions, PDF you will get if you don't have time to watch the video. But yes, if you have time, we will say go through the videos. तो videos वाला जो course है वो है current affairs for classroom program for prelims. Important है क्योंकि we are doing the PIQ linkages, we are doing the static linkages. So बहुत ही interesting तरीके से हो रहा है. Okay guys, so see you all. Enjoy the video. Take care of your health and do active revision. That is very, very important. See you all. Bye-bye.